As we all know that daily at 7 p.m. we come up with the current affairs, daily current affairs, except Friday and Saturday. So today is Thursday and we are here with the 7 p.m. daily current affairs. So if I'm audible and visible, just write in the comment section, yes sir, you're audible. Okay, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है एक बार लिख दीजिए comment section में, yes sir, you're audible. Okay, so before moving on, there is a small announcement. Those who are preparing for CLAT 2022, जो CLAT 2022 की तैयारी कर रहे हैं, hardly 2-3 months is left. So this is a crash course. Go for it. Call on this number or mail us here. इस पर call कीजिए, इस पर mail कीजिए. Then what are the benefits? Expert guidance by NLU alumni, day-wise study plan, weekly performance test, faculty counseling and guidance session. All topics will be covered through live classes. Okay, yes. So good evening everyone, good evening. So I hope you are aware that I give you question, you have to read the question and then you have to answer it accordingly. And whenever you are answering it, you have to write in the comment section the reason why you are answering so. So let's start with the first question of the day. And the first question is in front of you. Read it carefully and then answer it. Yes, good evening everyone, good evening guys. So the first question is related with Ukraine, okay? And that is why I'm asking this question. जो लोग भी देख रहे हैं, what is the right answer? Which of the following is incorrect about Ukraine? I'm asking. यानी इसमें से गलत क्या है आपको बताना है यूक्रेन के बारे में. सिंस यूक्रेन रशिया क्राइसिस इज वेरी मच इन द न्यूज, द वॉर इज वेरी मच इन द न्यूज, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. सम पीपल आर सेइंग डी, कुछ लोग सी बता रहे. एक्स सोवियत था ये तो डी. आयुष श्रीवास्तव है सेइंग डी, एक्स सोवियत था ये तो. आदिति, D is incorrect. Abhinav Jain. Why? Ukraine is largest. C, famous for oil. Anybody else? D, because only colonial countries of Britain are part of Commonwealth. So Archita Garg and Ayushi Srivastav have got confused. I knew this was a slightly typical question, but I have copied almost majority of the portion from either newspaper or Wikipedia. ठीक है? France is the second largest. D, because Britishers के कंट्रोल वाली कंट्रीज आती है. ओके, एनीबडी एल्स? यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इसमें लोग लिख रहे हैं कि एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज होती है एंड यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर. सो डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा. यस, देखिए आपका आंसर सही है. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू दिस क्वेश्चन इज द डी, बट द रीजन यू हैव गिवन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. जो आपने आंसर रीजन दिया है वो सही नहीं है, बट डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. नाउ लेट्स टॉक. इफ यू गो टू द विकिपीडिया पेज, दीज आर द वर्ड्स मेंशन्ड. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एरिया country by area in Europe after Russia, because रशिया का 20-30% ऑफ द रशियाज पोर्शन इज इन यूरोप, तो इसीलिए उसको सेकंड मान लिया गया. ठीक है. इट इज नोन एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप. हाँ, बिकॉज यहाँ व्हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है नॉल. सो दीज आर एक्चुअली राइट. That is why it is called as bread basket of Europe. It is famous for wheat production also, yes, and it is the second largest country by area. ये लिखा हुआ था विकिपीडिया के शुरू के 2-3 लाइन पढ़ोगे. This word is mentioned about Ukraine. So what you do is after the class is over, go and read about Ukraine and Russia on Wikipedia. थोड़ा सा आके पढ़िएगा इसको. विकिपीडिया पे जाकर यूक्रेन और रशिया के बारे में go and read it. ठीक है. So the right answer, these all are actually right, and since I was asking incorrect, मैं गलत पूछ रहा था, so D is the incorrect statement. Ukraine is a part of Commonwealth of Independent States नहीं है. कुछ लोग ये कह रहे थे yes श्रेया जान, very good, perfectly. There is a difference of Commonwealth of Nations and Commonwealth of Independent States. Yes. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ज्यादातर वो नेशन आते हैं जो एक्स सोवियत के ग्रुप्स थे, सोवियत यूनियन के. इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन. ये अलग चीज है.
और कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स अलग चीज है. व्हेन यू यूज द वर्ड कॉमनवेल्थ ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशंस जिसको हम कहते हैं, कॉमनवेल्थ नेशन मींस दे आर मेजरली दोज हु आर एक्स ब्रिटिश कॉलोनीज. ठीक है, ठीक है. एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसका जस्ट यू कैन से अपोजिट है एक तरह का. सो इट्स फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज आर मोस्टली हियर. But yes, technically speaking, Ukraine is a former USSR colony, but still it is not a part of CIS. ठीक है, तो ये सब CIS के मेंबर हैं, and here Ukraine is not a part of it. Although Ukraine was a part of USSR once. हालांकि USSR का हिस्सा था, लेकिन तब भी CIS का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो जो आप लोगों ने आंसर डी बताया वो सही था, बट व्हाट यू गिव द रीजन वाज रॉन्ग एक्चुअली. ठीक है, सो this is from the Ukraine Wikipedia page and they have mentioned it actually. अगर उसमें नीचे जाके पढ़ोगे they have mentioned about CIS countries and all, है ना. तो Commonwealth of Independent States के बारे में mentioned है. It has some relation but it's not a part of CIS. ठीक है, so just remember it. These are CIS members, Commonwealth of Independent States, but Ukraine is not a part of it. Okay. Now let's move on to the next one, the question number 2. And the question number 2 is related with NATO. I hope you are aware for the last 1 or 2 months NATO is coming in the news again and again, and that is why I'm asking questions from here. आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से NATO काफी ज्यादा न्यूज में, so that is why. Okay, you have to tell me about NATO. Which of the following is incorrect about NATO? इसमें से incorrect कौन सा है NATO के बारे में? People are saying D. First, because 30 members. Shreya Jan, please read the question carefully. Read the option. D. People are saying D. All are correct. Anybody from app? App से भी कोई बंदा बता दो कुछ यार. NATO is yes, North Atlantic Treaty Organization, right? Huh? Formed in 1945. Why people are saying A? देखो, we are saying that it has yes, it has 30 members, correct. तो इसमें लिखा होता है it is an intergovernmental military alliance comprising of 28 European countries and 2 North American. 2 North American countries में एक USA आ गया और एक कनाडा आ गया. ठीक है, और बाकी 28 यूरोपियन कंट्री हो गया. So it's 30, fine. इसमें क्या गलत है? So A is absolutely correct. The NATO's headquarters in Brussels, Belgium. That is also correct. And Article 5 of the Washington Treaty talks about the concept of collective defense. जो इसका main चीज है कि that attack on one will be considered as an attack on all the nations. Is this you will find in Article 5 of the Washington Treaty. Yes. So basically all are correct, and since I was asking incorrect, the right answer is D. All of the above is correct. कोई भी इसमें गलत नहीं है, so D is the right answer. ठीक है, C is correct. Fine. Now if you go to the NATO's website, this is North Atlantic Treaty Organization, and from their official website, collective defense लिखा है, Article 5 लिखा है. The principle of collective defense is at the very heart of NATO's founding treaty. And if you go and read about it in detail, they have mentioned it that the principle of collective defense is enshrined in Article 5 of Washington Treaty. ठीक है? And it was invoked for the first time after 9/11. Okay? Yes. So please remember it. The right answer is D. All of the above is correct. इसमें से कोई सा भी गलत नहीं है. Yes. Let's move on to the next one. The next is question number 3. So question number 3 is related with something related with the news related with Rajiv Gandhi. So I hope you must have read in today's first page in the Hindu and I think in Indian Express also regarding something related with Rajiv Gandhi. There was a news. So I'm asking which of the following is correct. Anyone? अच्छा, जो लोग देख रहे हैं प्लीज प्रेस द लाइक बटन. Whoever is watching, please press the like button.
everyone. C is incorrect because it's not at that time. D, all of the bus. What is saying D? अच्छा, कुछ लोग C बता दिए ये कह के कि गलत है. I was not asking incorrect, I am asking correct. इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन सही से पढ़ा कीजिए. Please read the question carefully because you will have to pay a very heavy price in the examination if you are not reading the question carefully. अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत हेवी प्राइस पे करना पड़ेगा एग्जाम में. होगा ये कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी में करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट, आता हुआ क्वेश्चन गलत और निगेटिव मार्किंग उल्टा चला जाएगा. डी सर टुडे इज द हिंदू. वीपी सिंह वाज ओके. Jasmine is saying A. Anybody else? Ashutosh is saying A. Anybody else? A. Parole. He was not serving. पहली बात तो मैं इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछ रहा हूं, फिर आंसर कीजिए. तो फिर ए इज करेक्ट. श्रेयास सिंह. देखो कल भी ऐसा हुआ था एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में सब बच्चे ने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया और वो आंसर नहीं था, उनको पता भी था कि वो आंसर नहीं है, लेकिन जल्दी में बहुत से लोगों ने गलती कर दिया. Assassination is on parole, but he has got bail. Yes, Navdeep, आज के अखबार में फर्स्ट पेज पे. भूमि मीना, yes, A is the right answer. By the way, I was also finding the wrong one. इसीलिए मैं कहता हूँ yes. Supreme Court has recently granted bail to one of its convict in Rajiv Gandhi assassination case. Correct? Shah Commission was appointed? No, it's not Shah Commission. It was Jan Commission. Shah Commission is related with emergency. So when after the Janata Party came to the power, they appointed Shah Commission related with emergency. So related with you can say Rajiv Gandhi's assassination, it's Jan Commission. And Rajiv Gandhi was not the Prime Minister. उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, हट चुके थे. So he was not the Prime Minister when he was assassinated. So the right answer is A is the right answer. ठीक है? So you can see it here. Supreme Court grants bail to Perari Valan, Rajiv Gandhi's assassination case convict who has been in jail for 32 years. So he has been granted bail after 32 years. ठीक है? 32 साल बाद. Yes. Now, so basically the right answer is A is the right answer. ठीक है? Now, you can see it here. It was the judge Milab Chand Jain. He was a judge, former Chief Justice of Rajasthan High Court. Under his chairmanship, Jain Commission was set up. ठीक है? Okay, you can see it here. Rajiv Gandhi died in 1991 and he was the Prime Minister from 84 to 89. ठीक है? So when he died in office, he was the President of Indian National Congress, but he was not a Prime Minister at that time. ठीक है? तो वो Prime Minister नहीं थे जब उनका डेथ हुआ था. Okay, the next one is the question number 4. The question number 4 is in front of you. Read it and then answer it. Actually, nowadays we are seeing editorials regarding the tussle between the Chief Minister and Governor, है ना? कई बार editorials आ रहा है. So that is why I have decided to ask questions regarding it. Krishnendu, Harsh, Tanish Nirvan, Nitin Pandey, Anisha Das, Jasmine from app, Vandana, Tanisha Nirvan, Ajay Mehta, ABS Views. Okay, so basically the right answer to this question is A, Article 163. See, we are talking about Chief Minister, so it is 163. If it is Prime Minister and President, then I will be talking about 74 and 75. 163 and 164 are related with this, the Chief Minister aiding and advising the Governor and all. So basically, हाँ, yes, मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा. Yes, Chandel, Ishan Singh, you all are right. So it's Article 163. There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at its head to aid and advise the Governor in the exercise of his function, except insofar he is by under his constitution required to exercise his function in discretion. Actually, यही वाली लाइन की वजह से कि governor has some discretion, it creates problem.
or sometimes usi mein tussle happen between the chief minister and governor. So just remember it is the right answer to this question. So आज एक editorial था tradition formality on politics and constitutional reforms where it was discussed. So you can see it here, article 163 clause 1 talks about it. Okay, let's move on to the next one, the question number 5. Now this question number 5 is also related with the same Ukraine-Russia crisis. I hope you are aware. So read this question carefully and I think you can answer it, because if you are reading the newspaper in the last 2, 3, 4 days continuously, you can answer it. No fly zone was in the news. आज भी अखबार में no fly zone, दोनों द हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस दोनों में था. द हिंदू में भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल थी. Yes, हर्ष, श्वेता, अनिशा, ABS, अनुपमा, ईशान, आयुषी श्रीवास्तव, वंदना, आशुतोष, मुस्कान, तनिषा, यशस्वी, नवदीप, Jasmine from app. Which of the following is incorrect? So Belarus is an ally of Russia. Of course, तभी तो Belarus ने पूरा allow कर दिया. We have discussed it that Russia ने Belarus ने allow किया, then they are invading from here also, right? तो ये तो पता होना चाहिए hopefully. If you are not aware of it, please be aware of it. Ukraine ने request किया था NATO से that Ukraine should be declared as no flying zone, which was rejected by NATO. तो NATO ने मना कर दिया कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते. So basically the right answer is D is the right answer to this question. One of the reason is that Ukraine is not a part of NATO. Ukraine NATO का part नहीं है, इसीलिए. So D is the right answer. Yes, Shreya, Harsh, Smile and Aditi, you all are right. A chance for peace on Russia-Ukraine talks. So yes, all of the above is correct. We have discussed it कि in fact attacks happen from this route also via Belarus also. Okay, so Belarus is a friend of Russia, you can say. Yes. Before moving on, there is a small announcement. Those who are preparing for CLAT 2023, which is supposed to happen in December, this is a comprehensive preparation course. Call on this number and mail us here. इस पर call कीजिए या इस पर mail कीजिए. What are the benefits? Expert guidance by NLU alumni, day-wise study plan, one-on-one mentorship, weekly performance test. 3rd March को ये course start हुआ है. Then if you are preparing for MH, CT, ALAT, SLAT, BLAT, JAMI, अगर आप ये सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, you can go for this course. Call on this number or mail us here. I am also teaching here. Okay, let's move on to the next one. That is question number 7. So question number 7 is in front of you. Read it carefully and then answer it. इस पर भी article थी actually. This article was in both The Hindu and Indian Express. So that is the very reason I'm asking question from here. जो लोग भी देख रहे हैं, please press the like button, everyone. A, B. कुछ लोग सी बता रहे हैं. अदीबा is saying A, Germany, ईशान, कशिश saying A, Jasmine from app is saying A, आदित्य कुमार, आयुषी, यशस्वी, कशिश, महादेव, आदित्य कुमार, वंदना, अस्मिता, अंश, कृष्णेंदु पांडे. Yes, you all are right. A is the right answer to this question. देखो एक बेस है रैमस्टीन एयर बेस, ठीक है. सो पोलैंड के पास MiG-29, एक्चुअली MiG-29 एयरक्राफ्ट जो रशिया ही ने बनाया है, ठीक है. सो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, बट पोलैंड के पास ऑलरेडी है. सो पोलैंड डिसाइडेड दैट टू शिफ्ट दीज जेट्स फ्रॉम इट्स ओन कंट्री टू रैमस्टीन एयर बेस इन जर्मनी, एंड दिस इज अ एयर बेस ऑफ USA. ये एयर बेस जो है वो USA का है, बट जर्मनी में लोकेटेड है, ठीक है. सो देन USA सेड कि नो, वी विल नॉट अलाउ दिस, मतलब टू हेल्प यूक्रेन को हेल्प करने के लिए MiG-29 फाइटर जेट्स पोलैंड जो है वो रैमस्टीन एयर बेस भेजवा रहा था. सो विच इज इन जर्मनी. A is the right answer to this question. So ready to deploy MiG-29 fighter jets to US air base in Germany, says Poland. ये 1-2 दिन पहले आर्टिकल थी.
and you can see it here. Here is Poland, here is Ukraine, and here is ये जर्मनी का, ये वाला जर्मनी है, दिस इज जर्मनी, ठीक है. ओके, सो जर्मनी के यहाँ पे रैमस्टीन एयर बेस है. सो पोलैंड ने कहा कि हम अपना MiG-29 यहाँ भिजवा देंगे. दिस इज अ US एयरबेस जहाँ से यूक्रेन को मदद किया जाए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट पोलैंड सेड. बट टुडे बोथ द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों जगह मेंशन था US rejects Poland advice to send MiG-29 fighter jets for Ukraine. तो US ने इसको मना कर दिया कि नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम लोग नहीं मतलब अलाउ करेंगे ऐसा करना, ठीक है. सो दैट इज वाई रामस्टीन एयर बेस इन जर्मनी वॉज वेरी मच इन द न्यूज. इज इट क्लियर? यस, इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन फर्दर. दिस इज MiG-29 इनफैक्ट रशिया ही के बनाया हुआ है. हो सकता है लोगों ने पहले खरीदा हो, पोलैंड ने हो सकता है रशिया से पहले खरीदा हो, बहुत पहले. So let's move on to the next one. देखो designed by Soviet Union है ना. The next one is question number 8. नहीं, समर्थ वार्ष ने पोलैंड ने कहा कि अपना MiG-29 एयर US की एयर बेस है ना, रैमस्टीन एयर बेस जो है ये US का एयर बेस है जर्मनी में. तो US का चलेगा ना, मतलब US will allow or not allow, that is up to the discretion of USA, ठीक है. इसलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. आई थिंक दिस वाज आल्सो इन बोथ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में था. रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट. People are saying, see, yes, Ayushi, Anupama, Kashish, Anisha, Deeba, Yashasvi, Shubham, Divakar, Shamin, Muskan, Samat, Ayushi, Jasmine from app, Amal. You all are right. It's the name is Endurance. So the name of the ship is Endurance, sorry, and it was crushed by Antarctic ice, ठीक है. So 100 साल बाद एक्चुअली मिला है. Shackleton's ship Endurance found beneath Antarctic ice 100 years on. 100 साल बाद जाकर के ये शिप थी वो मिल गई, ठीक है. So you can see it here. Ernest Shackleton बहुत फेमस पर्सन थे. Lost shipwreck found after 100 years. It came in the Hindu Indian Express, हर जगह आया था, ठीक है. He was a very famous explorer. So इन्हीं की एक शिप थी जो 100 साल बाद मिली है, ठीक है. ओके, let's move on to the next one. The next is question number 9. Guys, everyone please press the like button. सबको like button press कर दो. Everyone, जो लोग भी देख रहे हैं एक बार like button press कर दो. We're seeing only 29 likes. Everyone. Who was Soli Sorabji? Actually, he died last year in April. So still he is important, and there is a reason why I asked this question. Who was Soli Sorabji? आपको बताना है. सर प्लीज रिप्लाई, पूछिए क्या सवाल है. Samat Vashne Singh, D, very good, fantastic. Yes, Ayushi Srivastava, very good. Yes, very good. I have got only 2 right answers. Ishan is also right. Alamgir is also right. Shamin Naz, Nitin Pandey, Navdeep. सतलवाद को कल ही बताया था, बी नहीं होगा शायद. ओके, यस, ऑफ कोर्स. देखो, बी तो किसी हाल में नहीं होगा. जिसने कल क्लास अटेंड किया उसको ये बात तो पक्का पता होनी चाहिए दैट MC सेतलवाद वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है. तो ये तो होगा नहीं आंसर, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है. अब देखो ये क्या थे. सो बेसिकली ही वाज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल जरूर थे लेकिन ये पहले नहीं थे, और चूंकि नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में नहीं थे, ठीक है. वो जज नहीं थे, पहली बात लॉयर थे, तो ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, ठीक है. यस वांशिका, डी इज द राइट आंसर.
तो ये तरीका होता है, दिस इज हाउ स्मार्टली आई कैन आस्क क्वेश्चन. सो ही वॉज एन इंडियन जूरिस्ट हु सर्व्ड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1989 टू 1990. 1 साल के लिए रहे थे. सो ही डाइड लास्ट ईयर. आप देखो कोई डेट 30 अप्रैल 2021. तो 1 साल भी इनफैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है. सो दैट इज वाई मैं पूछा इसलिए था कि देर वॉज एन आर्टिकल रिलेटेड टू इट in Indian Express. I saw hate speech on social media has to be taken note of. Supreme Court Judge Justice L. Nageshwar Rao says this. तो जज साहब ने कहा था, ये सोली सोरबजी मेमोरियल लेक्चर में कहा था. ठीक है. सो दीज आर द स्पीचेस in the era of social media. Hate speech something which has to be taken note of. It talks about actually 28 states है, गलती से हो गया होगा. 121 language, 217 mother languages. He said that the country is doing so well because we believe in unity and diversity. पे believe करते हैं, इसीलिए country is performing very well. So actually he said this statement in Soli Sorabji First Excellence Award and Scholarship and Inaugural Memorial Lecture. उसमें उन्होंने कहा था. तो मैंने सोचा चलो सोली सोरबजी से एक सवाल पूछ लिया जाए. ठीक है. यस, SJ करनी है, फर्स्ट CGI थे. वेरी गुड ईशान. राइट. हाँ. So let's move on to the next one. CISF Raising Day is on 9th March, 10th March, 11th और 12th March. CISF मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. इट इज वन ऑफ द CAPF ऑफ इंडिया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स. ये एक CAPF है, मतलब इसमें बहुत सारी आती है. CAPF, CISF, CRPF, ये सब CAPF कहलाता है. ठीक है. CISF हुआ, CRPF हुआ, BSF हुआ. ठीक है. दीज ऑल आर, और भी ITBP हुआ, है ना. दीज आर यू कैन से CAPF इन इंडिया. एक और है 5वां. So yes, it's today actually. Yes, Ayushi Srivastava, Asmita, Tanya, Nitin, Tanya, Samarth, Vashni, Jasmine from app. It's 10th March today. CISF Raising Day. कोई बता सकता what is its motto? Can anyone write? I know it is a little tough. अगर कोई बता दे तो अच्छी बात है. So it was raised on 10th March 1969 and today is the date. Motto है protection and security. ठीक है. B is the right answer to this question. आप देख सकते हो ये एम्ब्लेम है. ठीक है. CISF का प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ओके. यस. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. नाउ आई विल बी मीटिंग यू ऑन संडे एट 7 PM. तो मोस्ट लाइकली हो सकता है हम लोग मेंटी क्विज लेकर के, आप लोग भी डिमांड कर रहे थे, तो मोस्ट लाइकली आई विल कम विथ दिस ऑन संडे. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.